हे खेल ही जिंदगी जिंदगी, खेल ही जिस्मानी शायरी, खेल ही दोस्ती दोस्ती, और हम भी मैदान के खिलाड़ी। खेल ही यकजहती है, खेल पे यकजहती की जिम्मेदारी। खेल ही आजादी और आजाद उड़ान ही तो है सब पे भारी। बारी बारी वार फिर अगले को खार, कोई लुत्फानंदोज कहीं औजार में भी हिस्सेदार। मेरे जैसे हजार यहाँ जज्बा है लाया कुदरती फनकार। दिल की आवाज में नामे दिल से निकले शोर, दिल की आवाज फिजा में हवा का रुख मोड़। हम भी कम नहीं किसी से, हाँ दम है कदम में, हार जीत भी सरहदों को दे यहाँ जोड़। खेल तो पूरी एक कहानी है, तूने अंजाम तक ले जानी है। खेल की वजह हार जीत नहीं, खेल तो जिंदगी कमानी है। खेल तो पूरी एक कहानी है, पूरे दिल जान से निभानी है। दिल में काम मुश्किल में है, दिल से खेल खेल दिल में है। खेल ही जिंदगी जिंदगी जिंदगी, दिल से खेल खेल दिल में है। खेल ही दोस्ती दोस्ती दोस्ती, दिल से खेल खेल दिल में है। ये है आपका अपना रेडियो स्टेशन। मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट मदहोश। आज करेंगे बातें आराम से। ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਚਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡਿੰਗ ਲਿੰਗ करे। ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਚਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡਿੰਗ ਲਿੰਗ Lord da Pava Aktarlava. Lord da Pava Aktarlava. Aktarlava Lahore da Pava. Aktarlava Lahore da Pava. Lord da Pava Aktarlava. Lord da Pava Aktarlava. ਲਾਵਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਹੱਸਦੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਿਕਟੋਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੇਖੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਹੱਸਦੇ। ਆਓ ਸ਼ੁਗਲੀ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਮੁੱਛ ਤੇਰਾ ਠਾਈ ਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਈ ਦੀ। ਆਓ ਸ਼ੁਗਲੀ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਮੁੱਛ ਤੇਰਾ ਠਾਈ ਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਈ ਦੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾਵਾ ਉਹ ਅਖਤਰ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾਵਾ ਲਾਵਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾਵਾ ਉਹ ਅਖਤਰ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾ 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 ਲਾਵਾ। Lord da Pava Aktarlava. नाम चाचा जी दे रखे ने बथेरे होने लोका, पर अख्तर लावे जिहा नाम कोई नहीं। टॉम एंड जेरी दे ते बहुत वड्डे फैन नहीं, सोच लो कि चाचा जी ते आम कोई नहीं। आई 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 दुनिया ते बनदे आखरी सियाने, जदों मारदे कसुन सच्ची लगदे न्याणे। जदों मारदे कसुन सारे टिकटॉकरे हो कहदे, ओए चाचा जी तुहानू लवे मौला, ओए तुसी मर क्यों नहीं जांदे। Aktarlava. चाचा लावा लावा तेरी अखां दा जादू, चाचा लावा लावा तेरी अखां दा जादू। चाचा ओ लावा ओ लाहौर दा पावा, चाचा ओ लावा ओ लाहौर दा पावा लावा। Lord da Pava Aktarlava. ਸ਼ੌਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖੋ ਕਰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅੱਗ ਬਾਲ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਇੱਕ ਝੁਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਲੱਗਦੇ, ਬੁੱਢੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਚਾਚੂ ਤਾਈ ਲੱਗਦੇ। ਅਖਤਰ ਲਾਵਾ ਪਾਵਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਐ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੀ ਖੱਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਐ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆਈ।
ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਲਾਵਾ ਪਾਵਾ ਮੰਜੀ ਦਾ ਕਿ ਪੇੜੇ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਲਾਵਾ ਪਾਵਾ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਲਾਵਾ ਲਾ 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 ਲਾਵਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ Lord, thy God power. Viewers, you are watching Hot Talk, and today our guest is Professor Dr. Shahid Monir, Chairman Punjab Higher Education Commission. Welcome to the show, Dr. Saab. Thank you very much. Are you ready for Hot Talk? Of course, I am ready. When you joined as a Chairman Higher Education Commission 16 June 2020, so what were the challenges for you? Some of the challenges are, number one is the capacity building of the commission, and second challenge was to improve the standard of higher education, and then to bring a change in the higher education system to transform the theoretical research into applied research, to bring a paradigm shift in higher education. This was a challenge for me because most of the universities are engaged in a theoretical research that is not being carried out on the problems of the Pakistani industry and the business organizations. So it was very imperative to bridge this gap and to bring the industry and university together on the same pages and to conduct the research on the issues of the Pakistani industry and business. For that very purpose, I started to work, and I gathered all the vice chancellors of the University of the Punjab in Murree for 3 days conference, a paradigm shift in higher education, a hackathon. So we deliberated on this issue that in future how the society is going to be transformed, how the world economy is going to be transformed in the light of the World Economic Forum reports, and all the reports were agreed that in the future the artificial intelligence, the industrial robotics, the data sciences, and then the biotechnology are the major areas in which the research will be focused. And the European universities and the American universities are already conducting research. They are developing the super intelligent robots. They are dealing with the issues of water scarcity, the climate change, and at the end of the conference, we established the 7 consortia, and they are working on the different issues of the climate change, women empowerment, water scarcity, energy, and so many areas, the robotics, etc. The purpose is to formulate the policy recommendations that will be transmitted to the Chief Minister Office and the Governor Office. And secondly, we conducted the expos to showcase the research conducted in the Punjab universities, so that the industrialists they can visit the expo and they can contact with the researchers. Similarly, we are conducting the training sessions for the Director Oryx and the Quality Enhancement Cell Directors, so that the universities can commercialize their research properly. Moreover, we are persuading the universities to conduct the thesis fair, so that the people from industry and the business, they can allocate the research topics to the students, and that research can be uploaded on the web portals of the Chamber of Commerce. So in this way, we want to bridge the gap between the industry and academia. We want that the universities should include the industrial professionals in their board of studies as well, so that the curriculum can be developed according to the needs of the market.
Mr. Chairman, what is the role of universities' research for policy making? At the moment, very little research. Our universities took part in the formulation of Vision 2025, and we have presented concept papers and roadmaps in that vision. For instance, for energy, Pakistan Energy Policy Strategy, I wrote a complete energy policy strategy, and that was integrated in that vision as well. And in the many academicians, they took part in it. But I think that the participation of the academia in the policy formation is very limited. It would be increased with the passage of time. At the moment, we have a shortage of PhD faculty in our universities. If you look at the PhD faculty versus student ratios, in many universities that ratio is 1:80. Whereas if you look at the Cambridge University or the Oxford or the Harvard, you will find that for every 4 students they have a 1 PhD faculty member. So this is a huge gap. At the first step, we are trying to attain 20 for every 20 students 1 PhD teachers in the engineering and the scientific fields, and for every 30 students 1 PhD faculty in the discipline of science, social sciences. So we are striving for that. Once it is achieved, then we will move forward to strengthen this ratio. Similarly, in our universities are mainly dealing with the undergrads. So the undergrads cannot create a new knowledge. For that, we need to increase the postgraduates, the postgrad programs, and the postgrad students. And to initiate the postgrad students, the HEC requirements are for that you must have an appropriate number of PhD faculty. So that is lacking in the universities. And then the quality of the PhDs that are coming from the China and the Malaysia and the other countries is also questionable. All the PhDs do not have a similar standard or the same standard. Because I have been the chairman of the selection board in the University of Chang and the member of the selection board in other universities, and now I am also participating in these meetings of the syndicates and the board of governors in various universities, and everywhere the situation is same. So every university is hungry to recruit good PhD faculty so that they can disseminate and impart the knowledge to their students. So we are lacking currently in this dimension. For that very purpose, the federal HEC, provincial HEC, the Punjab government, Punjab Education and Endowment Fund, all are trying hard and providing resources to the faculty to get their PhD degrees from the top 100 universities of the world. So we are hopeful that when they will resume their positions, this component will be strengthened, and the research output and the policy making participation will increase. What is accountability mechanism for PHEC? We are for financial accountability. The Auditor General of Pakistan, every year they conduct the audit of the PHEC. For controlling authority is the Chief Minister of the Punjab, and we are answerable for every sorry, that's it. यहीं से start कर लीजिए. So we are answerable for every that's very step. Another important function of the PHEC is the preparation of the feasibility studies for the new universities in Punjab, and similarly for the private universities that want to get the charter. So we make sure that the according to the Punjab government 2006 policy, all the parameters have been met, and then we forward the case to the HED and the Provincial Assembly for the charter as well. How much PHEC focusing to create opportunities for the PhD holders? Yes, there are schemes, but I could not get a funding yet. One of the scheme is that the scholars that have gone abroad on PEEF scholarships, when they return, we want to provide them an opportunity on interim placement for 1 year in the universities in the Punjab. And the secondly,
being our representation in the syndicate, we make sure that all the recruitments are being made on merit. I think that for a good PhD, there is no limitation. More than one universities are eager to recruit such person having a specialized knowledge. I think for a good PhD, there is no shortage of jobs. Mr. Chairman, where do you see PHEC when you would complete your tenure? I think the PhD will be a much better place after 4 years of my tenure. We are going to start our recruitment policy. We have formulated a recruitment policy that will be approved by the commission, and then we will recruit the different DGs and the directors on a competitive process basis. So similarly, we have launched a proposal to the Government of Punjab for acquiring a land for the own building of the PHEC and a training academy for the PHEC. So capacity building of the PHEC is very much imperative in this regard. Secondly, we want to increase the funding of the PhDs and the postdoctorate and the foreign trainings and the conferences for the faculty. Thirdly, we want to increase the teachers training program for the colleges and for the universities. Fourthly, we want to complete the Capacity building. capacity building, and then we are in the process of improving the curriculum of the associate degree program as well. And secondly, we are in the process of formulating an app that every student in the Punjab should apply through that app in every university. The purpose is to get the data that how many students are going into which discipline and in which demographic area, in which area, which degree is the hot degree, so that on the basis of that data we can suggest the government that in which area or in which discipline the universities should new universities should be established. So the data generation, the data utilization, for better planning, for better policy making, I think the central data bank is very, very important. That we have initiated a program with the support of the BIDB as well. So when I leave after 4 years, the PHEC will be a very vibrant voice in policy making, in curriculum development, and in training imparting in the universities in the Punjab and the colleges, inshallah. Mr. Chairman, are you satisfied with the quality education? And secondly, all those programs which you feel, PHEC feel there is no scope or no need in future, that must be stopped. No one can be satisfied completely. If you get satisfaction, then you cannot progress. So definitely we are not satisfied, and we want to achieve the heights in every program. As far as your second part of your question is concerned, that those programs that are not generating money should be stopped. We are not in that favor, because if you look at in universities, the Punjabi department cannot give you money. The philosophy department cannot provide you a good money. Kashmiri art department cannot provide you money. But these programs are very much essential for the character building, for well shaping up a society. Their role is enormous. And alive the literature. So everything is not done for the finances only, for the money generation. So it is very much imperative for the human resource development in different disciplines, for the creation of new knowledge, because now the knowledge, there are no boundaries for the disciplines. Now the interdisciplinary research is very, very important. Maybe the philosophy can be linked with the human resource development, with the psychology and the other branches of science and arts. So I think those programs cannot be stopped. And what are your 3 priorities? Number 1 is to bring a paradigm shift from the theoretical research to the applied research. Number 2 is the capacity building of higher education, and number 3 is to provide a comprehensive quality assurance system to the universities of the Punjab. Thank you so much, Mr. Chairman. Our program Hot Talk, but the answers were very soft and very prompt. Thank you so much.
viewers, I would like to say goodbye, and we would see you in the next program, Hot Talk with the different guests. Immigration problem? No problem. For spouse visa, family visa extension, family visit visas, business visitor visa, EU settlement, immigration appeals, asylum appeals. Get work permit license for your business to bring skilled workers from overseas. Please contact the top ranked immigration barrister of UK, Barrister Kasper Hussain Varaich. Mobile number 07501981095. त्रिगड़दाती तुम 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 सच के लम्बरदार बेखौफ खतर की सहार सच के लम्बरदार बेखौफ खतर की सहार तुमसे तफरीह मिले तुमसे खबर मिलती है दिल के बागीचे में क्या क्या नकली खिलती है तुम जो रोशन हो तो रोशन है हर एक दरियाए जान तुम सहर दोगे तो परेशान कहाँ डरते हैं बसालत तुम समात तुम हिफाजत तुम हिमायत तुम नयाबत तुम क़यादत तुम हिदायत तुम वज़ाहत तुम तनन 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 No problem. For spouse visa, family visa extension, family visit visas, business visitor visa, EU settlement, immigration appeals, asylum appeals. Get work permit license for your business to bring Barrister Kasper Hussain by. तो फाइनली तुम ये कमरा खाली कर दोगी? कितनी दफा बताओगी? और ये घर भी तुम त्रिगड़दाती 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 तुम सच के लम्बरदार बेखौफ खतर की सहार सच के लम्बरदार बेखौफ खतर की सहार तुमसे तफरीह मिले तुमसे खबर मिलती है दिल के बागीचे में क्या क्या नकली खिलती है तुम जो रोशन हो तो रोशन है हर एक दरियाए जान तुम सहर दोगे तो परेशान कहाँ डरते हैं बसालत तुम समात तुम हिफाजत तुम हिमायत तुम ताजा मछली ये मिर्च मसाला अरे गिल्लू मिर्चों से मसूड़ों में जलन है कोई हल? कोलगेट हर्बल नेचुरल है। कोलगेट हर्बल लौंग, नीम, यूकलिप्टस और पुदीने वाला कोलगेट हर्बल मुंह में ठंडक पहुंचाए, दांत मसूड़े सेहतमंद बनाए।
मसूड़ों में जलन अब नहीं। कोलगेट हर्बल अपनाओ, जो चाहो वो खाओ। मजबूत दांत, सेहतमंद मसूड़े नेचुरली। जैज प्रेजेंट्स खेल दिल में है। खड़ी है खेल तो पूरी एक कहानी है, खेल तो जिंदगी कमानी है, खेल तो पूरी एक कहानी है, पूरे दिल जान से निभानी है, घर मैदान मुश्किल में है, दिल से खेल खेल दिल में है। दे तू अपने जुनू की तुझे कसम, तू है खिलाड़ी तू ये जान ले, यकीन कर तेरे कदमों में तूफान की ताकत भरी है, गेंद तेरे इन हाथों में अंबर में उड़ती फूल जड़ी है। खेल ही जिंदगी खेल ही जिस्मानी शायरी, खेल ही दोस्ती खेल ही आजादी, और आजाद उड़ान ही तो है सब पे भारी, बारी बारी वार फिर अगले को खार, कोई लुत्फानंदोज कहीं औजार में भी हिस्सेदार, मेरे जैसे हजार यहाँ जज्बा है लाया कुदरती फनकार, दिल की आवाज में नामे दिल से निकले शोर, दिल की आवाज फिजा में हवा का रुख मोड़, हम भी कमने की चीजें हाँ दम है कदम में, हर जीत भी सरहदों को दे यहाँ जोड़। खेल तो पूरी एक कहानी है, तूने अंजाम तक ले जानी है, खेल की वजह हार जीत नहीं, खेल तो जिंदगी कमानी है, खेल तो पूरी एक कहानी है, पूरे दिल जान से निभानी है, दिल में ना मुश्किल में है, दिल से खेल खेल दिल में है। खेल ही जिंदगी दोस्ती दिल से खेल खेल दिल में है। ये है आपका अपना रेडियो स्टेशन। मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट मदहोश। आज करेंगे बातें आराम से। जदों तकिया ते चढ़ गया चा ते दिल मेरा डिंगलिंग 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 करे, जदों तकिया ते चढ़ गया चा ते दिल मेरा डिंगलिंग डिंगलिंग। करेला जुड़वा है पर अलग है, दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो दूसरा है नरम मिजाज, एक सख्त तो दूसरा है नरम मिजाज, पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज, ये जिद्दी दाग निकाले और इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ मुबारक हो, 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 मुबारक हो। तमाम यूफोन कस्टमर्स को मुबारक हो, क्योंकि सिर्फ यूफोन सुपरफोन कस्टमर्स रोजाना हासिल कर रहे हैं करोड़ों रुपए मालियत के यकीनी इनामात। इसके साथ साथ बजरिया कुरानदाजी जीतेंगे शानदार 1300 सीसी गाड़ियाँ, बेशुमार मोटरसाइकिल्स और सोने के झुमके। ये ऑफर मौजूदा नए और यूफोन नेटवर्क पर मुंतकिल होने वाले तमाम कस्टमर्स के लिए है। मुबारक हो। पर मेरे पास तो यूफोन नहीं है। नहीं, आपका बेटा हुआ है। तालियां क्यों बजा रहे हो? मैं तो लाइट ठीक करने आया था। बाले लाइट मुंह पे मार।
रात को ज्यादा खा लिया। आए आपके मोबाइल फोन में बैलेंस खत्म हो चुका है। जरूरत के वक्त बैलेंस खत्म? कोई बात नहीं, अब तक तो जीरो बैलेंस होने के बावजूद भी आपके यूफोन से मिस कॉल जा चुकी होगी। आपका दोस्त फौरन मिस कॉल देखकर आपको कॉल बैक करेगा। आप उसे अपनी मुश्किल बताएंगे और वो जरूरत के वक्त आपके काम आएगा। अरे यार, अब क्या मसला है? लेकिन मेरे पास तो यूफोन ही नहीं है। बराबर वाली आंटी ने कुत्ते के काटने की खुशी में ये भिजवाए। मिठाई? नहीं, 14 टीके, सारे खट्टे ना लगा लें। उठा लेना फोन आसिम। कासिम भाई कितने अरसे के बाद अमेरिका से कॉल कर रहे हैं। बेटा जिद न कर, आखिर तेरा भाई। मैं उठा लेता हूँ। खबरदार, मेरे होते इस घर में कासिम का फोन कोई नहीं उठाएगा, बल्कि अपने यू फोन से कॉल बैक करेंगे, क्योंकि वहाँ से कॉल महंगी जो पड़ती है, समझा कर। इसीलिए अब यू फोन से यूएसए, यूके और कनाडा कॉल्स करें पाकिस्तान की तारीख के सस्ते तरीन रेट, यानी सिर्फ 1 पैसा फी सेकंड पर। ऑफर के लिए अभी *2288# मिलाएं। ऐसी ऑफर कोई और दे ही नहीं सकता। कासिम भाई, वहाँ इतना पैसा कमाकर क्या करेंगे? कॉल तो यहाँ सिर्फ 1 पैसे की है। मेरा सलाम कहना। मैंने तुम्हें कॉल करके कहा था एक नरम सा गद्दा लाकर बिस्तर पे डाल दो। तुम ये गद्दा कहा था? हाँ। कसूर इस बेचारे का नहीं, आपके मोबाइल नेटवर्क का है। सिर्फ यू फोन दे ऐसी साफ आवाज के बाद पूरी और सही समझ आए। नरम सा तो है। कैसी शरीक याद चाहते हैं आप? बोलो अमीर। लड़की गोरी हो, लंबी हो, खूबसूरत हो, शादी के बाद माँ बाप की खिदमत करे। अपने नहीं, मेरे माँ बाप की खिदमत। बहू पानी लाइए अब्बा। जब मैं दोस्तों के साथ बाहर जाऊँ तो जल्दी आके मेरे साथ बोर ही होंगे, लेट ही आइएगा। और जहेज? जहेज एक लानत है। ऐसी आइडियल बीवी तो नामुमकिन है। आप ऐसा करें, यूफोन की नई सिम घर ले आएं। खूबसूरत आवाज, खानदानी नेटवर्क, फौरी राब्ता और 600 रुपए का बैलेंस भी ला रही है हमारी नई नवेली यूफोन से। बताना। जी हाँ, अभी नई यू फोन सिम खरीदें या यू फोन के नेटवर्क पर मुंतकिल होकर हासिल करें 600 रुपए का इजाफी बैलेंस। लेकिन जहेज में नहीं, तोहफे में। हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो रात के अंधेरे में भी नजर आए। पर आपका बेटा तो दिन के उजाले में भी नजर नहीं आता। हो जाएगा जी, हो जाएगा। घर जाके मैं औलाद की दुआ करूंगा। जी, तो कौन सा उम्रा पैकेज चाहिए आपको? हमारे पास 1 लाख से 5 लाख रुपए तक के पैकेजेस हैं। 5 लाख? जी हाँ, 5 लाख रुपए में 5 स्टार पैकेज। अब अल्लाह के घर जा रहे हैं तो 4-5 लाख रुपए कौन देखता है?